Hello everyone, and I'm very pleased and glad to introduce with the another star of DBMCI, amazing rank of 165 in the recent INICET examination. Welcome, Anukriti. Heartiest congratulations. Thank you so much, ma'am. I would like to thank all the DBMCI faculties for literally sharing a part in my journey, and they played a major role in my preparation. I thank literally from the core of my heart to all of you, and I'm really grateful. Right. I think you have already given us the reward, Anukriti. The gradient and gracious smile that we can see on your face is the reward of everyone, every faculty at DBMCI. Right. You were with us in the live TNT batch, right, Anukriti? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, were you giving the TNTs regularly with us? Yes, ma'am. I was giving the TNDs regularly and all the GTs regularly. I was very afraid to give the TNDs. I won't lie. And even before GTs, I never felt ki I'm sure to give the GT, but I did give it because I knew the importance of giving a test. And it was much more important than just revising my notes, because notes may you read things and still you do them wrong in GTs. But अगर आप जब GTs में कुछ गलतियां करते हो ना, दे स्टिक विद यू फॉर एवर कि यार इतने अच्छे से पढ़ा था ये चीज, तब भी जीटीज में और टीएनटीज में गलत हो गया, तो दैट स्टेड विद मी. और वो चीजें ना दे हेल्प अ लॉट इन द रियल एग्जाम. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि इज व्हाट हेल्प्स is कि you remember it for a long time, because just revising the notes like 2-3 times are not that helpful. Putting them in the test and the analytical skills and the educated guesses you learn are through the GTs and the TNDs only. And I will say that TNDs are the most important thing, much more than the content. Everyone runs after the content, but I feel that giving GTs are much more important, because content you forget, but the mistakes you make in GTs you never forget. Exactly. Yeah. So I think application, like you said, Yeah. we keep on learning, but how to apply that knowledge that you get from Yeah. GTs and Yeah. TNT? And that was the most helpful thing, that that was because of my TND batch only. Right. Yes, So, when you used to give the GTs, Anukriti, how did you felt the type of questions? Were they similar to the real? Were they simulating the real pattern? ma'am. Actually, I would say ki they were they were just on the line of previous year questions, and they were simulating the pattern. But it's never always similar to the real exam. But आपको knowledge apply करनी आ जाती है कि आप क्या कैसे करोगे. और कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड सिमिलर तो नहीं होता. जैसे हम कहते हैं कि अब की बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आए थे, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आए थे, एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स सारे के सारे रिपीटेड थे. तो व्हाट हेल्प्स इज कि आप कैसे एनालिटिकली सॉल्व करके अप्लाई कर रहे हो अपनी नॉलेज को, और कैसे आप उसको कि कितना ज्यादा आप अपना होराइजन वाइड करके सोच सकते हो उस बारे में. तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल टीएनडी के थ्रू. और आई रियली लव्ड कि हाउ कंसाइज इट वाज, एंड ऑल द टीचर्स लाइक लिटरली हेल्प्ड अस कि सारे के सारे नोट्स हमारे एक ही जगह पर ले आए. और इट वाज कि बहुत ज्यादा क्रिस्प और कंसाइज था कि आई कुड रिवाइज इट इन द लास्ट 15 days. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आई लाइक टू से इज कि इट्स नॉट कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना स्टूडेंट्स को इज कि कंसाइज करना अपने नोट्स. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हिच आई वाज नॉट एबल टू डू. सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं अभी तक अपनी प्रिपरेशन में कर रही थी टिल नीट यूजी, आई डिड नॉट गेट अ गुड रैंक इन नीट यूजी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट था और मुझे नहीं पता था कि कैसे उसको अप्लाई करना है और कैसे कि इतना सारा रिवाइज कैसे करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच हेल्प्ड मी वाज कि टीएनडी के सारे नोट्स वर कंसाइज एंड फुल इन इटसेल्फ. कि मुझे ना अपने मेन नोट्स दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की. और लास्ट में मैं अपने टीएनडी के नोट्स फिर से रिवाइज कर सकती थी. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपके टीएनडी के नोट्स आप जितना एटलीस्ट आप पढ़ रहे हो ना, एटलीस्ट उतना रिवाइज करो, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे वो सब कुछ आप फिर से रिवाइज नहीं कर पाओगे. टीएनडी की नोट्स कम है और आप रिवाइज कर सकते हो बड़े आराम से एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, और दैट हेल्प मी अ लॉट, मैम. Right. So that reminds me कि how many times did you revise, Anukriti? ये तो हर कोई पूछता है. तुमने भी पूछा होगा कि हाँ सीनियर से कि कितनी बार रिवाइज करना होगा.
मैम मैंने एटलीस्ट 5 times कर लिए थे रिवाइज She's अपने. very honest, guys, because others are, are being moderate, not, they disclaiming ki they have revised so many times. So if you have revised 4 to 5 times, so I think these notes are very, very concise and high हाँ yield, हाँ right? मैम, दे वर वेरी कंसाइज कि मैंने लास्ट महीने में एटलीस्ट 3 times रिवाइज कर लिए थे. आई कंसाइज इट टू द मैक्स आई कुड. दैट्स व्हाई आई कुड रिवाइज इट लाइक 3 times in the last month only. Right. And another $1,000,000 question, Anukriti, ki how early you should start giving the grand test? When did you started? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था जीटी से, मैंने नहीं दिए. That's a इवन common feeling, common feeling. मैम मुझे मतलब दैट वाज माय लूप होल इन प्रिपरेशन कि अगर मैं शायद स्टार्ट कर देती पहले देना जीटीज इवन अपने नीट यूजी के नीट पीजी के ईयर में, तो आई कुड हैव गॉट अ बेटर रैंक. बट आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन एनीथिंग. मुझे नहीं था मन अपने इंटर्नशिप के फेज में पढ़ने का. आई वाज लाइक आई डिड नॉट ठीक वांट टू है, स्टडी. when you start your day ना तभी morning है. हाँ वही मैम. I started religiously giving GTs in my drop phase only. Like I gave at least 12 to 13 GTs in these 4 5 months from May to November. Right, guys. So please see, as I always tell you in the classes also, कि our plateau phase will come not before 14 to 15 GTs, and make sure that you are in that phase near your examinations. See, she is a live example. She had given 12 to 13 GTs and she is there at an amazing rank. So I always say this to the students that every year the guy says that I had started early, but I should have started even earlier. So please, all those who are listening, please don't fear. And as soon as you start your preparation, please start giving the grand test, right? मैम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने इसलिए नहीं दी थी जीटीस क्योंकि आई थॉट कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी. बट यू जस्ट हैव टू चेंज योर माइंडसेट कि यू कैन डू इट. सबसे ज्यादा मतलब कि फ्लॉ मेरे पूरे नीट पीजी के ईयर में था कि मे बी मेरे से नहीं होगा क्योंकि इतनी ज्यादा हेक्टिक ड्यूटीज चल रही हैं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से टू ऑल दी स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. लाइक यू शुड थिंक कि हाँ यू डिजर्व इट एंड यूल गेट इट. बिकॉज जब मैंने अपना नीट पीजी का पेपर देखा था तो आई वाज लाइक कि काश मैंने पढ़ लिया होता, थोड़ा सा ही पढ़ लिया होता, काश थोड़ा सा भी पढ़ लिया होता. तो मतलब कि एटलीस्ट यू नॉट रिग्रेट कि आपने पढ़ा है, और यू विल हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि यू कैन डू दिस. Exactly. If you are winner here, then you will be a winner in your actual preparation, right, Anukriti? So, which TNDs you liked most? मैम सबसे पहले तो अश्विनी सर का एनाटमी वाज गोल्ड स्टैंडर्ड. और उसको देखते ही आई वाज लाइक काश मेरे मेन नोट्स भी अश्विनी सर के ही होते, बिकॉज मेरे मेन नोट्स उनके नहीं थे. और दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक और टू रिवाइज ऑल्सो. बट उसके बाद लास्ट में मैंने अश्विनी सर के टीएनडी की नोट्स ही रिवाइज करे थे लास्ट के 3 महीनों में, और दैट वाज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मी. उसके बाद आई लव्ड जय सर सर्जरी और सौरभ सर फार्मा was good. Yeah, like I did not even read my main notes. I just did TND for that. Or physiology was too good. Physiology was complete in itself, and anesthesia was complete in itself, and ma'am, ophthalmology for sure. Yes, and I also loved maybe I completed all my favorite subjects. I'll have to go through the list. All right, Anukriti. Yeah, pathology, ma'am, pathology. How can you forget the pathology, right? Yeah, how can you forget pathology? Right. So, did you felt, Anukriti, that these notes were crisp and concise, and they were totally complete? If you want to go through your revision in the final phases, then you can revise these notes. For sure. Like for pathology, I revised it on the last day. मेरे सिर्फ TND के notes, क्योंकि मैंने पूरा pathology starting में करा था और last में करा था just through my TND notes. And मेरे जो main notes थे, they were too vast. I could not do it again. So I just stick to the TND notes. Right. So, anything that you felt that you had not done
or you did something wrong that you would like to pass on to your juniors and colleagues that they can learn from your journey? मैम सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ना अपने नोट्स कंसाइज करने चाहिए जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि मैंने अपने ना नीट पीजी वाले ईयर में, इंटर्नशिप वाले ईयर में, आई वाज लाइक कि इतने ज्यादा वास्ट नोट्स मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे। मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करके नोट्स बना तो लिए हैं, बट उनको पढ़ना was getting tougher and tougher for me. तो सबसे important है कि just stick to one platform, any platform you're using, ठीक है, beat any platform and stick to it, क्योंकि trust me, there is no limit to the content available online and on all the platforms. The most important thing is कि you have to concise your own notes, and plus कि सबसे ज्यादा बुरा ना तब लगता है जब आपके, मतलब तब बुरा नहीं लगता कि कोई बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आ गया जो कि हमारे नोट्स में ही नहीं था, तब बुरा लगता है जब हमारे नोट्स में था वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ था बट स्टिल हमसे वो गलत हुआ क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे नोट्स में ऑलरेडी था वो गलत हो। अपने कंसाइज नोट्स बनाओ और मैक्सिमम टीएनडीज, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने सारे के सारे इंटीग्रेट कर लो अपने मेन कंसाइज नोट्स के साथ जो आपके गलत हो रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके एक बार गलत होते हैं you may make the same mistakes again. तो just concise it। और पता है मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगता था जब मेरे क्वेश्चंस इन अ रो बहुत सारे गलत हो जाते थे, बट आई फील दैट्स ओके कि सबके साथ होता है। अगर मेरे साथ होता था तो मतलब सबके साथ ही होता है, और उससे ना गिव अप नहीं करना चाहिए कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मतलब कि दे आर जस्ट एडिंग टू योर नॉलेज। क्वेश्चन बैंक से अपनी सबसे पहली बार अगर क्वेश्चन बैंक्स कर रहे हो तो डू नॉट जज योर नॉलेज एंड डू नॉट पुट इट टू अ टेस्ट कि यार मुझे कुछ नहीं आता। पीवाईक्यूज अगर गलत हो रहे हैं कोई नहीं, इट्स ओके, दे आर जस्ट सप्लाइंग, मतलब कि दे आर सप्लीमेंटरिंग टू योर कंटेंट, मेन कंटेंट, जस्ट एड देम टू योर नोट्स। आई लाइक टू से दिस। Right. Anukriti, what extra did you did or what did you did in your last 10 to 15 days? मैम एक्चुअली लास्ट के 10 to 15 डेज में बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ गया था कि इतना ज्यादा पढ़ लिया है लास्ट के 15 डेज में, मैं क्या करूं अब, इससे ज्यादा नहीं हो रहा मुझसे। तो आई ई गुरुकुल की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी यूट्यूब पे। तो मैंने, क्योंकि मुझसे एक्टिवली मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो आई वॉच ऑल दोज वीडियोस की एटलीस्ट खुद नहीं पढ़ रही तो आई डोंट वांट टू वेस्ट अ मिनट कि, और आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं। आई जस्ट वॉच ऑल द वीडियोस, ऑल द content available online or all in the TND app, and I just heard it passively कि मुझसे एक्टिवली नहीं हो रहा और मैं बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गई हूँ, तो एटलीस्ट सुन लेती हूँ कंटेंट, and that also helped me a So lot. means PYQs are important in the last days. Either you can do it live on YouTube or you can do it manually. So PYQs and PYTs should be done in the last phase, because you know when you are studying everything, we always have a confusion what to revise in the last days. So there should be something that is always high yield. That should be done in the last few days, right? But मैम पहली बार, सिर्फ एक बार नहीं करने पीवाईटीज, मैंने एटलीस्ट 3-4 बार करे थे पीवाईटीज, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एटलीस्ट फॉर आई थिंक अभी कि प्रीवियस ईयर टॉपिक सारे रिपीट होते ही होते हैं, मतलब कि सेम क्वेश्चन ही रिपीट होगा बट प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आर रिपीटेड invariably, and you have to do it not just once, 2 times or 3 times at least. I just feel that. No, it's for sure. And that's why we keep on insisting that please at least do the PYTs and PYQs as many times as you can, right? Yes, ma'am. All right. So I think a very, very concise discussion we have done, a very clear-cut message that actually giving GTs is important, and concising your notes is important, and revising the PYQs and PYTs is a must. And finally, the trust and mindset are very, very important. और So, मैम FOMO में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, FOMO में नहीं रहना चाहिए. That I think today's word is actually facing the biggest problem of this FOMO. हाँ कि मतलब एक तो सबसे पहले कि we feel drop phase में कि we are stuck in a loop, everyone is enjoying, हम ही enjoy नहीं कर रहे हैं, all engineering friends are enjoying, and उनको तो देखना ही नहीं चाहिए, उनको तो देखना ही नहीं चाहिए. Everyone is moving forward in their life, but I think
They stepping are in marrying back, phase, huh? And we are in PG phase. yeah, stepping back to mind for a greater jump is good, and your hard work pays off at the end. So just don't be in a FOMO कि हाँ यहाँ से कर लेती हूँ, यहाँ से कर लेती हूँ. Stick to one source. जो भी तुम्हारा source है, just keep it and revise it multiple times. Perfect, perfect. So heartiest congratulations once again, Anukriti. We are very, very happy. We are really proud of you. You have all made us very proud. And we wish you all the very best for your future endeavors also. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you, ma'am.